Welcome back. You're watching NewsX. I'm Rishabh Gulati. Ladies and gentlemen, it is a Confucian curse, they say. May you live in interesting times. And what interesting times we're living in. The impact of what has happened in the war on Iran has not yet been felt. We've started feeling the pain points in terms of fuel prices right now, but the real impact, let me just say, it's probably going to get worse before it becomes better. We are a large economy, much larger than we were 20 years ago, so we are able to withstand it better. But let's not kid ourselves, from food to fertilizer to oil, everything is a bit of a mess. Now, within the context, and which is why we are having this conversation, is we are expecting not a rare, but an unusual cabinet meeting that's going to start off in Delhi in just a few minutes. To the best of our information, all the senior council of ministers have been requested to attend this briefing. In the meeting, most of the ministers, the senior ones, will be presenting detailed annual reports. Remember, the 12th year of Narendra Modi as Prime Minister is concluding on the 9th of June, and an annual report system is par for the course, standard operating procedure for the Prime Minister when he's dealing with his cabinet. So this is going to be an annual exam, not for everyone, but for many people. A performance check, a report card is going to be happening over the next few hours. We are expecting a meeting that's going to go on for several hours in which these annual reports will be presented. And within reason, we are expecting a rare, and I use the word rare with caution, but a rare cabinet reshuffle. And why do I use the word rare? Rare is that we have gotten used to stability in government. It was important for the country. You might agree with certain things, disagree with certain things, but you can't deny that we've had stability in government at the Union. 12 years under Prime Minister Modi. I think the longest number of finance minister speeches by Nirmala Sitharaman, stability in the finance ministry, consistency in the external affairs ministry, consistency in the national security office with Ajit Doval as NSA, rough consistency when it comes to the technocrats who are part of the cabinet. Ambassador Jaishankar, of course, is not a career politician, he's a career diplomat, so qualifies as a technocrat. So is a person like Ashwini Vaishnav, Piyush Goyal. You had some consistency in the highways ministry. Nitin Gadkari has been there for some time. But there are some obvious things that are going to change. Nitish Kumar has not come to Delhi just for the great weather we have here. He's come to Delhi for some sort of cabinet berth. So it's reasonable to expect that he'll get a senior cabinet berth there. Will it be railways? Will it be something else? We don't know. There is a major election victory in Bengal that has just concluded for the BJP. Would make sense maybe to have a Bengali face in the cabinet, or induction of somebody fresh, or a promotion for someone. There is an election in UP coming up. So the politics of this also makes a difference. But I can't emphasize enough that while the politics matters and all decisions of appointments are not devoid of politics, a large percentage of them in a very technocratic, stable cabinet is performance oriented. So a lot of the ministers are going to be not relying on their political weight to keep their job. They are going to be relying on their actual delivery and performance. And Prime Minister Modi takes that very, very seriously. Delivery and performance, I can tell you, he takes it very, very seriously. You, like I said, might agree with something or might disagree with something, but that's the form with which he operates. Now, let's open up this conversation. I have reporters on the ground who are joining us on this broadcast to try to get perspectives on information which I have to admit is few and far between. So what do we know? We know that a Council of Ministers meeting is taking place. We know that all ministers have been asked to attend. We know that most of them will be presenting annual reports today. It is going to be a marathon meeting. The meeting is going to conclude. We don't know if there is going to be a cabinet briefing afterwards. There might be, but nothing is scheduled right now. And we suspect, we have good reason to believe that a major cabinet reshuffle is going to take place
either this evening, but more likely tomorrow. And we'll see a whole new Council of Ministers reformulated with some new faces. I mentioned a couple of obvious ones. Nitish Kumar is going to be an obvious one. That's politics. Others are going to be based on other things. So we have some information coming in. Renik Datta joining us from Kolkata. Sandeep is joining us from Chandigarh. I have Sanjay joining us from New Delhi as well, and Nikita is joining us from Lucknow. So Sanjay, let me आपसे शुरू करते हैं. पहले आप थोड़ा ताज़ा खबर बताइए, क्योंकि हमें पता है कि आज की कैबिनेट मीटिंग स्पेशल है. इट्स नॉट अ रूटीन वीकली कैबिनेट मीटिंग. ये एनुअल रिपोर्ट कार्ड्स, एनुअल रिपोर्ट सारे मंत्री कर रहे हैं. क्या खबर मिल रही है आपको कि क्या अभी इस कैबिनेट मीटिंग में अंदाज़ा क्या है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा आज? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि पूरे के पूरे जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा मंत्रिमंडल है, सभी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है. सभी को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए क्या कह दिया गया है. और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ है, जहाँ पर कि ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये बैठक होगी. और हमने देखा था पिछले साल जब बैठक हुई थी लास्ट ईयर, तो उसके ठीक बाद मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की बैठक के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में रिशफल किया था, बड़ा रिशफल किया था. तो इस बार भी यही संभावना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में कोई बड़ा रिशफल करने जा रहे हैं. तो ये रिशफल की तैयारी है, ये इस बात का भी संकेत है. इसके अलावा इस बात का भी संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाए. उनके कामकाज के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाए गए, जिसका लेखा जोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक में देंगे. इसके अलावा जिन मंत्रियों के अच्छे काम हैं, लगभग 4 से 5 मंत्री ऐसे हैं जिनके काम काज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि देश की जनता को इससे फायदा मिला है, बेनिफिट हुआ है. तो उनके कामकाज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यहीं पर प्रेजेंटेशन होगा. लगभग 4 से 5 मंत्रियों के नाम अब तक तय किए गए, जिनका प्रेजेंटेशन आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में दिया जाएगा. इसके अलावा जो मंत्री हैं, जिनका परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री को लगता है कि कहीं कहीं पीछे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्शन देंगे, क्या क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है. हॉर्मुज़ रूट बंद होने के बाद में भारत की सप्लाई चेन पर जबरदस्त असर पड़ा है. चाहे पेट्रोलियम की बात करें, डीजल की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, दवाइयों की बात करें, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सप्लाई चेन के कारण जो भारत में प्रभाव हुआ है, उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम मंत्रियों को उठाना होंगे, मंत्रिमंडल को उठाना होंगे, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहीं पर मंत्रियों को डायरेक्शन देंगे, निर्देश देंगे. तो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. रूटीन कैबिनेट की बैठक बिल्कुल नहीं है. मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बैठक में इसमें एक एक मंत्री इन्वॉल्व होगा. कैबिनेट मंत्री होंगे, MOS होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस भी होंगे. तो पूरा की पूरा मोदी मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद रहेगा.